Question number 10. This question, first part of this question is of partial fractions, and the second part of this question is of integration. First part of the question is, let fx is equal to this 36a square over 2a plus x, 2a minus x, 5a minus 2x, where a is a positive constant, express fx in partial fractions. In the denominator, all the three factors are linear, so we can write it as 36a square over 2a plus x, 2a minus x, 5a minus 2x, that this is equal to a over first factor plus b over second factor plus c over third factor, 5a minus 2x. Now we'll take the LCM of right hand side, which is all the three factors. 2a plus x, 2a minus x, 5a minus 2x. So when this LCM is divided by this factor, so this term will be cancelled out, this factor will be cancelled out, तो we get this, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो we write a into 2a minus x, 5a minus 2x, in the same way b into 2a plus x, 5a minus 2x plus c into 2a plus x, 2a minus x. Now this fraction, this function is equal to this. In this equation, the denominators are same. From both sides cancel out. We get 36a square is equal to a into 2a minus x into 5a minus 2x plus b into 2a plus x into 5a minus 2x plus c into 2a plus x, 2a minus x. Now we will find the values of constant a, b and c. A, b, c की values find करने we will put each factor equal to 0. First of all, we will put 2a plus x is equal to 0. From here, x is equal to minus 2a. We are putting here x is equal to minus 2a in this equation. We get 36a square. Left side 36a square is equal to, ये x is equal to minus 2a यहाँ भी नहीं पुट हो सकता और यहाँ भी नहीं ये पुट होगा क्योंकि 2a plus x is equal to 0 है. This term becomes 0, this is also 0, hence we can find the value of a. So a into 2a minus x is minus 2a plus 2a हो जाएगा ये 2a plus 2a into 5a minus 2 into value of x is minus 2a. Simplifying, we get the value of a. This is 4a
is minus or minus plus 5a plus 4a, that is 9a. 36a square is equal to 36a square into a. Cancel out. From here we get a is equal to 1. A is equal to 1. Similarly, we will put the other factors, that is 2a minus x is equal to 0. 2a minus x is equal to 0, x is equal to 2a. इसी इक्वेशन में अब हमने x को 2a पुट करना है. सो 36a स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2a. यहाँ पुट नहीं हो सकता क्योंकि 2a माइनस x इज इक्वल टू 0. दिस टर्म विल बिकम 0. This term also becomes 0. So we can find b from here by putting x is equal to 2a. So b into 2a plus 2a into 5a minus 2x means minus 4a. Putting here the value of x, 4a, simplifying, 36a square is equal to b into 4a into a. 36a square is equal to b into 4a square. Now from here the value of b is equal to 9. Similarly, we will put the third factor is equal to 0, that is 5a minus 2x is equal to 0, and x is equal to, from here x is equal to 5 over 2a. Now in the same way we will put x is equal to 5 over 2a in the same equation. We get, now we can find the value of c, बिकॉज 5a माइनस 2x जो है इस टर्म में भी लाई कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, तो सो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा. तो सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हेयर. तो सो 36a स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू 2a प्लस 5 ओवर 2a इंटू 2a माइनस 5 ओवर 2a. Simplifying, 36a square is equal to c into 9a over 9a over 2 into minus a over 2. 36a square is equal to c into, simplifying इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, we get minus 9a square over 4. So from here we can find the value of c, that is minus 16. So these are the values of a, b and c. C is equal to minus 16, b is equal to 9, and a is equal to 1. So we will put these values here. We get fx is equal to 1 over 2a plus x, b is equal to 9, so 9 over 2a minus x minus 16 over 5a minus 2x. This is the partial fraction form of the function.
Now move to the next part, B of this question. Hence find the exact value of integration of fx with the limit minus a to a. अब हमने fx, now fx is this partial fraction form of this function. Now we will integrate the above function with the lower limit minus a, upper limit is a, giving your answer in the form p log q plus r log s. इस फॉर्म में हमने आंसर देना है where p and q are integers and q and s are prime numbers. Minus a to a is the limit. Fx is 1 over 2a plus x plus 9 over 2a minus x minus 16 over 5a minus 2x. With respect to x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. We will integrate each term या fraction separately. Since the denominators are linear in all the three terms, so we will use here log. The integration of first fraction will be log 2a plus x. The integration of the next term will be 9 log 2a minus x over minus 1. ये over minus 1 कहाँ से है? इस 2a minus x का डेरिवेटिव लेके हम उससे डिवाइड करेंगे. इसका डेरिवेटिव होगा -1 क्योंकि a इज अ कांस्टेंट बट x इज अ वेरिएबल, तो इसकी डिफरेंशिएशन -1 होगी, तो डिनोमिनेटर में हम इसको लिख देंगे. इसी तरह हम थर्ड फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज -16 log 5a minus 2x 5a minus 2x divided by -2. डिवाइडेड बाय -2 क्यों आया है? इसकी डिफरेंशिएशन 5a की 0 है और -2x की -2 है डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर में इसको लिख देना है. नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट्स. लिमिट्स आर -a to a positive. First we will apply the upper limit, then lower limit. In place of x we will put a. This becomes log 2a plus a. We will adjust this minus a here. इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. log 2a प्लस x, ये माइनस का साइन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इट बिकम्स -9 log 2a माइनस x. माइनस और माइनस से प्लस हो जाएंगे, 16 से कैंसिल आउट 8 आ जाएगा, तो सो वी राइट हियर 8 log 5a minus 2x. Now we apply the limits. Minus a to a, upper limit is 8, so log 2a plus a minus 9 log 2a minus a plus 8 log 5a minus 2a. This is upper limit. Minus lower limit. Lower limit is minus a. In place of x, now we will put minus a. This becomes log 2a minus a minus 9 log 2a plus a, क्योंकि a x
की जगह पे हमने माइनस ए पुट किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 log 5a plus 2a. Now we will simplify it. अपर लिमिट अप्लाई की ये आ गया और माइनस लोअर लिमिट ये है, अप्लाई किया तो ये आ गया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट log 3a, दिस इज 3a, log 3a माइनस 9 log a प्लस 8 log 3a माइनस log a माइनस 9 log 3a प्लस 8 log 7a. log 3a माइनस 9 log a प्लस 8 log 3a माइनस log a प्लस 9 log 3a minus 8 log 7a. Now collecting the like terms, 3a वाली एक टर्म ये है और ये और एक ये, इनको हम ऐड करेंगे तो वी गेट 18 log 3a. log a वाली टर्म्स जो है एक ये है और एक ये है, तो सो माइनस 10 log a minus 8 log 7a. नाउ वी विल यूज हेयर लॉग प्रॉपर्टीज। ये देखिए यहाँ पे 3 और a मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी चेंज इनटू सम, so we can write it as 18 into log 3 plus log a. यहाँ पे log प्रॉपर्टी यूज हुई है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट विल बी चेंज इनटू सम, माइनस 10 log a माइनस 8 और विद इन ब्रैकेट, और यहाँ भी प्रोडक्ट है 7 और a का तो सम में चेंज हो जाएगा, तो log 7 plus log a. Further simplifying, we get 18 log 3 plus 18 log a minus 10 log a minus 8 log 7 minus 8 log a, or these two terms will cancel out. 18 log a और 10 और 8 ये भी कैंसिल आउट हो गया ये, तो वी गेट फाइनली वी गेट 18 log 3 minus 8 log 7. This is the final answer. और क्लियरली दिस टर्म 3 and 7 जो कि प्राइम है और P और R जो हैं P and R are इंटीजर,